नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर मीटिंग इन दिस मास्टर ओवर एसे सेशन एंड आई हैव ब्रॉट अबाउट द टॉपिक्स and that are not one or two but number of topics there so that we can predict what type of questions are going to come this year. The people who are going to attempt this year, please be ready with pen paper so that we can discuss some ideas. Let's make a flow. Let's understand how to write an essay for UPSC. Already the sessions have been done. It's a perhaps marathon sort of thing that I want to do with you all, but without your participation that would be lacking. I again welcome you and I hope it is all audible to you. And it is after, I think, 3-4 days that we are meeting via this channel. I was really longing to meet you all since many days passed by. And here we are with this session. I hope you are getting all the voice. So we are giving last minutes, first minute tips. Everything is going to come here. Don't worry. Just feel easy for the few minutes that we are going to take of yours and do this essay wonderfully. Okay, so this is Chandramouli in front of you and the educators are giving you best of the things. Use it, crack this examination sooner. CSE Assure, matlab, if you take 2 years and above subscription, you get 1 year of extension. So the people who are going into maybe the colleges right now, they are studying, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो आराम से एश्योर ले सकते हैं और 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, तो 3 साल 4 साल की तैयारी भी आपकी हो सकती है। CMC कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। सितंबर में आई विल हैव 5 मेंटीज। एनीवन इंटरेस्टेड टू हैव सब्सक्रिप्शन, रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम, और नंबर भी लिखा है टेलीग्राम पे, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमको। Okay, so we have these 2 subscriptions, Majorly Plus and Iconic. In Iconic, you get 1 extra mentorship support. But in both of these 2, whichever day you feel like, I'll be there for you. This is my code of CMC. And combo means GS plus optional, दोनों ही आप तैयार कर सकते हैं अपना एक साथ। समय के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे पहले GS का ऑलमोस्ट 60% कर लेना है, तब मैं चालू करूं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब दे रहे हैं, CMC कोड का इस्तेमाल करके आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन लेना है आपको तो वो भी ऑफरिंग है हमारे पास, आप उसका भी ले सकते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद, फिर से सभी का स्वागत है। और ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 तारीख से बैच चालू हो रहा है, मतलब अब तो कल आ ही गया आपका। कल से कुछ बैचेस चालू हो रहे हैं, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज का भी आप पूरा लाभ ले सकते हैं। एंड दिस मेंस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग इन द सेंस दैट पूरे साल चलेगी आपका। तो जिनको लगता है कि मुझे लिखने में अपना कैपेबिलिटी डेवलप करना है, तो पीछे मत हटिए, अभी समय है। कंटेंट बन रहा है आपका, धीरे धीरे काफी बन चुका होगा, इसको यूज करिए और आंसर्स लिखना चालू कर दीजिए। बहुत अच्छे से हम लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। विल बी हैविंग आवर सेशंस, एनालिसिस सेशंस ऑन दिस, विल गिव यू लॉट ऑफ पॉइंटर्स ऑन दिस, यूज करिए। September 11 इट इज स्टार्टिंग। और एडुक्वेस्ट आपने लॉन्च हो चुका है, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। वी आर गोइंग टू पुट अप इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू गेस। जो गेस करेगा सही वो जीतेगा कुछ बहुत बढ़िया तोहफा। काफी टाइम बाद, बिल्कुल सही है। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये ग्रुप है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, इसके लिए तो कोई रियायत नहीं है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। चंद्रमौली SIR एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इसमें आपको नंबर भी मिल जाएगा अब, और आप चाहें तो एक बार आप संपर्क भी कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम यू हैव। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। और चालू करने से पहले एक बहुत पॉजिटिव बात आपसे कर लें। कहा जाता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। मतलब है कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें पॉजिटिविटी ना हो। आपका नाम स्वयं देख लीजिए, आपके नाम की पॉजिटिविटी आपको समझ में शायद नहीं आती होगी, पर वाकई बहुत पॉजिटिव है। आपके जितने नाम है, अशोक, सौरभ, शुभनीत, आप अपने नाम को, ये हर एक अक्षर इसका एक पॉजिटिव चार्म है। और दूसरा पार्ट हमने कहा, मूलम अनौषधम नास्ति, मतलब कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसका एक प्रॉपर्टी ना हो जो आपकी मदद कर सकते। कहने का मतलब जो आपके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा कोई जड़ आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई यूज ना हो। आगे इसमें एक और बात कही गई है, अयोग्य पुरुषम नास्ति, कोई ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा आपको जो अयोग्य है। प्रॉब्लम क्या है, योजकतत्र दुर्लभः, उसको योजन करने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उस पुरुष का भी बता सके कि आपका ये पॉजिटिविटी है, आपकी ये क्रिएटिविटी है, इसको यूज करो। ये मिलना दुर्लभ है। Otherwise, everyone has their own value. Every akshar, every root and every person has its own value and you have that. Good evening, फिर से सभी का स्वागत है। एंड
आई होप यू ऑल आर फाइन हियर। चलिए चालू करें, इफ इट इज ऑल फाइन। ठीक है, तो आज के लिए कुछ आपको टिप्स बता देते हैं हमें क्या करना है। आपके सामने एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के ऊपर इस बार का प्रिडिक्टेबल रेट हम देखेंगे, कितना इस तरह से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। आई टेक सम ब्रॉड व्यू, उसका एक छोटा सबसेट भी आ सकता है। और उसमें आगे एक एक्सरसाइज हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें 1 2 3 4 करके खूब सारे पैराग्राफ्स और आइडियाज आने वाले हैं। आप अपने पेन और पेपर के साथ तैयार रहिएगा। वी आर गोइंग टू डू अ लाइव सेशन हियर, लाइव प्रैक्टिस, नेवर डन बिफोर। लेट्स डू दिस। आइए, सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक आ चुका है, यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। व्हाई आई फील दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, after the pandemic time and after a lot of events that have been happening around us, there was the buzzword of depression going on. It's a reality today that we must understand, but it can be overcome. I feel that the whole scenario of the society, of the individual, is perhaps categorized into this quotation of mine, and I feel that this is going to lie in some sense in the examination hall. You either control your mind or it controls you. और उम्मीद है इस बार का अगर ऐसा पेपर आया तो माइंड के ऊपर, कि आपका कंट्रोल माइंड पे हो या माइंड आपको कंट्रोल करता है, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी आपको करनी पड़ सकती है या करनी पड़ेगी। आइए चालू करते हैं आज का सेशन विद दिस फर्स्ट एसे, एंड दैट टेक अ ब्रॉड व्यू इन दिस। यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। इसका ब्रॉड व्यू लेना है। आइए चालू करते हैं, और आपके सामने आ रहा है एक्सरसाइज पैनल। दिस इज फॉर यू। Let me see how many of you can just attempt. आइए देखते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 16 blocks are there. In each block we are going to give a unique idea for our essay. Let's have a connectivity. सबसे पहले ब्लॉक में आने वाला है my introduction. My introduction is going to come in the first block. Just remember the topic once again. It is either that you control the mind or it controls you. इसका एक इंट्रोडक्शन समझिएगा, इसका इंट्रोडक्शन चाहिए हमें। क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, आराम से देख लीजिए। यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। इसका एक इंट्रोडक्शन हमें चाहिए, और उस इंट्रोडक्शन में आप बस एक हिंट दे दीजिए हमें कि आप किसको यूज करना चाहते हैं। आई रेफर टू वन एनेक्डोट। हमने आपको एनेक्डोट बताया था। आई वॉन्ट यू टू यूज द एनेक्डोट। You either control your mind or it controls you. I need an anecdote. चर्चित जी का कहना है बुद्धा का स्टोरी, ठीक है, कॉन्शियसनेस, बुद्धा का स्टोरी। और कोई बताइए, आगे बताइए, बताते रहिए। You either control your mind or it controls you. I need an introduction. Just give me a hint. You either control your mind or it controls you. Please tell me. Please tell me. Shall I give you one? Shall I give you one? And that starts in Sanskrit but has most of the meaning throughout this, and that goes like, if you allow me, I want to give you something. It goes like, chanchalam hi manah krishna parmathi balvadridam. If you could remember this, I have often said upon this, chanchalam hi manah krishna parmathi balvadridam. You have to apply force on it. So it is rightly said, when you only talk about the mind is so infinite, has infinite power, has infinite dimension, you cannot just fathom. But if you recognize that you have this very chanchal, very fragile, yet you can control it via power. So the greatest of the scriptures, you talk about Buddhism, you talk about Jainism, or even if you talk about Bhagavad Gita, any religion, any scripture, they all talk about taming your mind. Chanchalam hi manah krishna parmathi balvadridam. So that means our mind has to be fragile. You have to control it. So how can I relate an anecdote here? Maybe go back and talk about what this all thing was happening during maybe any epic that was taking place. कोई epic चल रहा था, उसमें कुछ चीजें हो रही थी, वहां पे दुविधा उठ रही थी। सिंपल सा आप बता सकते हैं, अगर आप इमेजिन करें, एक सिनेरियो बनाते हैं, ये घर में एक सिनेरियो बनाते हैं, एक एनेक्डोट बनाते हैं। ब्रिंग इन मदर, ब्रिंग इन डॉटर और सन। Examinations are nearby, and this person, son or daughter, is really troubled. But the mother, being experienced,
She says that there are two ways only to get success. One is either perhaps you just imagine and leave everything and you feel that yes, you are already successful, utopian world you can go into. But the second notion is the harder way, and that is taming your mind. You will have to tame your mind and seek into whatever knowledge your books are going to give you, and then you have to go about. Okay. The story of bird's eye of Mahabharat, excellent. So I just want you to take up any one thing, but make an anecdote. I would prefer your original anecdote over others. Why I am saying so is because others might be using the ones that are already present. But I want you to use your original ones. And I must tell you again, originality is respected in this examination. If you have that originality, you can control it. You can get the marks. Now see, Buddha, almost every one of us can write. Mahatma Gandhi, any one of us can write. But if you make something very original and unique, they would respect it. Got it? So you can talk about anything. You talk about focus. You talk about controlling the mind. And that is my introduction, that how do we go, how do we make an anecdote. I bring in maybe son, father, or maybe our perhaps daughter and mother, and then show a relationship going, maybe the conversation that is going on, and they talks about that, see, this is the bond and this is something that you can maybe read and can grasp it and then can be produced back. You can talk about all this. ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं. Can we do this? Okay. If you can do this, my introduction part is done. So not those stories, but you can go with that also. But I would prefer writing originality. Originality would be respected. Okay. Let's begin the first paragraph. That would be history. Again, those who are new, please see, the topic was you either control your mind or it controls you. I want you to go back in history and talk about any such point where in history you have seen, please see, in history, if you can get any one point where the mind was being controlled or where the mind controls. Acha, Ankush Star ji asks, have you cracked prelims once? Then yeah, how can I crack? You all are great people. You should crack this. Why are you worried about me? You worry about yourself now. I wish you crack it sooner. Okay, don't worry about me. You worry about yourself now. Okay. Okay. So history. In history, the first paragraph. See, I have written one introduction and then I come to my history. I want to get an idea about where the mind controls. And perhaps the second is either you are controlling your mind or it's your control of the mind. Ankush Starji, you can talk to me on Telegram for these personal details. This is the class going on. I would request you so not to give any such idea here. You can talk to me on Telegram. I'll reply every part of you. Okay, don't worry. Let's study if you want to study here for some time. Else, Telegram is there already with you. Let's come. So, history. So there, I'm getting some ideas. Chakuni had no, come. अभी इतना भी scripture में नहीं चले जाना है. Chanakya is a good example. Aurangzeb, okay. Anything else? Mind control. Now you can bring about where the mind is being controlled. Where the mind is being controlled. You can talk about any such great religion may be. Okay, stop laughing at it. I cannot stop that. Yeah, actually, positivity has to come. See, you are also laughing then, no? Okay, so you have mind controlled as an example, maybe Buddhism, maybe Jainism, where mind is controlled, where someone is controlling the mind. At the second place, where control is perhaps, or the mind is not able to be controlled, can I have an example? Can I have an example where the mind is not able to be controlled? Anyone? Where the mind is being tamed or controlled, if perhaps I get my idea of Mahatma Gandhi non-violence, yes, mind being controlled, tamed, but wherever it is not controlled, what I can get? Where I can get, please let me know.
Arey, no, you don't go into your verbal thing. Let everyone speak. Don't, not a problem. Kshitij, you answer me. Don't answer them. You answer me. You answer me. So what is, where mind is controlled, you take by. Okay. It's actually that only. Please, you enjoy the session. That is what. Okay, you enjoy the session. That is all you can do. Thank you so much that at least you liked being as the comedy. Thank you so much. Anyone who can say that mind being not controlled? Mind not being controlled. Anyone? Anyone here? Mind not being controlled. See the topic once again. You either control your mind or it controls you. Where the mind controls you, where the mind has desires, where the mind has certain aspirations and it want to control you. And it want to control you and you are not controlling your mind now. You're not taming it. You are being controlled by it. That's very correct. You see your perhaps every such answer that you are giving where you know that it was the mind that was controlling them. They did not have the control over their mind. So they just went with the flow of it. They went with the desires of it. And there is where mind is working. Wherever the mind controls you, wherever this mind is controlling you, you are not going towards the positive development part. You are going towards somewhere where negativity will be coming in. Any example throughout you can give where the mind is not actually controlled, it controls you. Any such example, wherever you see wars, wherever you see the weapons being developed, these all say that the mind actually, if it is not controlled and if it controls you, you are going to have lot of troubles coming up. Any such idea that you have, any such regime, any such thing. So in history, when you go back and see, you have many ideas where the mind is controlled and they are very peaceful, very non-violence exists there. But then where the mind is controlling, mind means fragility. Lot of desires are there. Lot of adventures are to be there. And then it is perhaps war, not so peace existing, and that any regime you can talk about, destruction. So when the mind controls, you are going to have destruction. Because mind, you don't have any limit where you want to stop. In history also, when we had the being attacked over the whole, maybe the Indian territory only, there were many attacks being done. It was the mind that was controlling them. They were not controlling their minds. Had our self-control be on the mind, then perhaps we would have stopped. Now, after writing this part, I can now get a question. You either control your mind or it controls you. Please understand, I have just given an instance here. The second paragraph can be a question to me, can be a question. Can be a question, for example, what is the power of mind? What is the power of mind? This power of mind can be infinite. This power of mind can be guiding you towards something very developmental also and towards non-development also. This can be whatever positivity is in there. So mind is a very subjective thing. You can have some good things also coming by. You can have some negatives also coming by. But then when you control your mind, you are in self-control. When the mind is trying to overcome your control, then the problems exist. It all depends now upon what your mind has been grasping. Is it grasping something very positive? Or is it grasping only the things that would want to be controlled? So you can try to talk about here what is the power of mind in one paragraph. And then the third paragraph that you can talk about is why the control. Why the control is needed. Why the control is needed. Why do we need to control the mind? Let it allow to have this infinite thing. Why do we want a restrictive approach towards controlling the mind? हमें आखिर कंट्रोल करना क्यों है? अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल करने का मतलब है कि माइंड का पावर, इफ यू अलाउ इट टू गो मच अहेड एज कंपेयर टू वॉट एवर दिस होल वर्ल्ड कैन ग्रास्प, कैन एब्जॉर्ब, तो प्रॉब्लम है. Mind has got infinite power, but then you will have to control it as per the pace of this whole world,
whole society, and then maybe take it into one direction. Maybe take it into one direction. This is what you have to do. समझ सकते हैं आप? Why the control is needed is because we are not sure what is there in the mind. We are not sure. We want to impinge the mind. We want to bring the mind under the realm of humanity. Now starts my concern of humanity. I want to bring the mind under the control of humanity. That means everything that the mind want to do would be for humanity, for the human development. This is now my coming of the first tool of the philosophical essay. This is humanity. Get it? Got your point? Got this point? Why the control is needed? Because we want to control it for the humanity, for the development of it. And that is where I need the control. If the control would not be there, the mind can do many things, can be going here and there. But this is my first thing that I'm bringing in as the tool of philosophy, that is humanity. The tool of philosophy. Got it, everyone? Perhaps not everyone, but got it? So, why the control? What is the power of mind? And the history, I gave some instances here where the mind without power, or the mind without control, or control without mind is going to work. 3 paragraphs with 1 introduction already done. Let's go back to the topic once again and see what it was. You either control your mind or it controls you. Okay. Why the control done? Now let's see. Anything in the regional space you would talk about? Anything in the regional space, or maybe anything in the geography you want to talk about? Anything related with geography you want to talk about? Anything? Please let me know. See the flow now. I went to the history. I brought 2 philosophical angles. What is the power of mind, where you can write few lines on it, and why the control is needed. I want now to ask you, can I bring about some spatial dimension to my essay? Some spatial dimension to my essay, anyone? When I say spatial, geographical factors. Not only those mountains, rivers, you can go beyond that. You can go beyond that, please go. Anyone? Beyond that? Anyone who would like to try with geography? Japan expansion of control of countries in 1900s. Controlling. Okay, we can do that. We can do that. Okay. Anyone else? Anyone else where through spatial dimension I want to prove that the mind, if not controlled, will control you. It is either you control the mind or it controls you. Trade routes, resources. ठीक है? ठीक है. और कुछ एकदम इम्पैक्ट बनाने वाला, जहां आप इम्पैक्ट लगा सकते हैं. Places where the mind is controlled, places where mind controls you. Acha, I just want to take you into a dichotomy of rural versus urban. Please do not take it in the negative sense. Please do not take it in the negative sense. I want to maybe let you understand the rural versus urban idea and my essay topic. Essay topic is, it is either you control the mind or it controls you. Rural versus urban. Let me see, can you reach to that point or not? Rural versus urban is the geographical dimension I am giving you. Let me see how many of you can do this. Rural versus urban dimension. Anyone? कौन कर सकता है देखते हैं. Anyone who can do this? Rural versus rural development. नहीं, कुछ और सोचिए. Topic आना चाहिए. Topic is, it is either you control the mind or it controls you. थोड़ा और सोचना होगा. Let's do this practice. क्या हो सकता है? I have given you hint, geography, rural versus urban, and you have to talk about where the mind is not being controlled and where the mind controls. More awareness in the urban areas than the rural. ठीक है? अच्छा, ठीक है. Wait for some time. The topic is, it is either you control the mind or the mind controls you.
where you control the mind, it shows patience. It shows actually the low levels, perhaps ground level. It shows natural order, where you control the mind, you tame it. But where the mind controls you, it shows the fragility, the consumerism, the demands, the ever increasing incomes that have to be there. You can now just try to think of. I've just given you an idea where the mind, either it is the mind that controls you or you control the mind. When I control my mind, I will have to be very much having that self-control. Where the mind controls me, I don't have control over it then. Whatever it says I have to do, and that could be limitless. This is the distinction. Natural versus your urban artificial things. Maybe don't get offended by this, but this is the reality. Wastefulness versus your maybe the things that are saved, conserved. Did you get the idea? Did you get the idea, everyone? समझ में आया what I was taking or where I was taking you to? समझ में आया पक्का? देखिए, this is the way in which you have to link your essay topic. ये dimensions हैं. जितना ज्यादा dimension आप relate कर सकते हैं, उतना बेहतर है. I could have done the other way into the world also. But perhaps rural versus urban is something I wanted to showcase in my examination or my paper. जहां mind control करेगा, there I will have over consumerism, over demands of the things. Where I control my mind, I'll be patient. I'll be happy. I'll be content with whatever I have. That brings me to a very important idea of maybe satisfaction. See, how do I make the flow now? I talk about the over demand, over consumerism here. I bring in the keyword of satisfaction. The next paragraph. Since I have already written something, the examiner gets an idea that now he might even talk about satisfaction, and that means if you are controlling your mind, you are satisfied. You are content with whatever you have. Anandah asti swikritihi. You are happy with whatever you have. But there could be non-happiness also prevailing, and where you are not satisfied with whatever you have. The biggest of the things you might have in this world, yet you are not satisfied. And there are people who are satisfied with the least of the things. It is mind. They have controlled their mind. They have put their control on the mind. That is satisfaction. I hope you have now understood. I'm just trying to practice a flow with you. There were many requests I got. Ki sir, flow nahi banta, ye flow hai. It's a very natural flow I am going through. So I have done history, some instances. What is the power of mind? Why the control? Then regional space geography also came by, and satisfaction, another thing. Let's talk about some more keywords now. If I have done this till this part, see the question once again. You either control your mind or it controls you. Or it controls you. Let's enter into the realm of society. You have great ambit of writing paragraphs in society. You can even write 2 paragraphs in the societal thing. How do you explain in society if the mind, it is either the mind that is controlled or perhaps the mind controls you? The 2 things that is possible in society. That society where the mind is being controlled is going to flourish, is going to have equity, is going to have women empowerment. Where the mind is being controlled. Controlled in the sense, it is not allowed the fragility, the limitless thing to come out. It is going along with some pace. But wherever there is greed, there is inequality, gender gap, etc., that is perhaps where we have not controlled the minds have been controlling. And the societal problems are going to exist. Just a simple thing you can talk about. For example, where the mind is being controlled, you will never allow child labor to exist there. But where the mind is controlling, it would always want to grow the
people would have in their mind, let's allow this child labor. We'll save some money. That is mind controlling them. They are not controlling their mind. It is mind and their analysis controlling them. Let's allow this to go. So in society, you have a lot of dimensions to talk about, and this you can use anything. So genius mind talk about ideas. That's correct. Ethical values, wise use of funds. Okay, we'll use that in economy also. But for the societal paragraph, can I talk about the two societies flourishing? One where the mind is being tamed. You get a wonderful societal development, and wherever the mind is being left and it controls you, you're not going to get a lot of things. So it is either you control the mind or the mind controls you. The two things that are possible. For the better part is, let you control the mind so that you can have the taming on it and you understand how to use it. Done? Done? Okay. Having done these 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphs, still a lot of ideas we have. Let's talk about, now, since we have already reached the societal part, let's now talk about some different ideas, and that could be, suppose, I want to bring in now the notion of life. Another great tool that I have given you already, life. How do you use life? Please understand, we have already discussed this. Life, good life, etc., etc. When I say life or good life, it is to all mean that you were always controlling your mind. You were always under the self-control. Whereas, if your life that you were living, and if someone asked you, did you live a good life? You would say that I was always controlled by mind. I don't know that was a good or not. So when you have self-control, you are having life that is being controlled. You have a mind that is being controlled, and that is your life. A purposeful life, that's the word. A purposeful life. You have a purpose. A purposeful life. And if you do not have a purposeful life, you had mind only controlling you, and the mind is never on one way. Chanchalam hi mana Krishna, it is never on one way. So you can talk about life. You can add Bhagavad Gita also, very correct. You can add it. Okay. So see, again the flow. From society I came to the life. From society I came to the life. I hope you can all understand. I hope you can understand. From society you can come to the life, and there you can talk about that this, see, it's a purposeful life that should be there. हम तो यही हैं, यही थे हम कहीं नहीं गए, हम तो यही थे. Done. Again, let's go back and see the topic. You either control your mind or it controls you. You either control your mind or it controls you. I have talked about life. Please let me tell you, knowledge versus wisdom. And I hope you can easily write a paragraph on this. You can easily write a paragraph on this. Knowledge is only the collection of information, ideas. You can get a lot of ideas, you can collect a lot of ideas, but that is not going to make you having spent a good life, or maybe your control over the mind. You are grasping a lot of things. But knowledge versus wisdom. Wisdom now means if you have got the right knowledge to be used at the right time, at the right place, that is, you are controlling your mind. You are having that idea of using the things that are under your control. So the power of mind, if controlled already, means you are wise enough. If you are not wise enough, you are perhaps, you are a knowledgeable person, that's not a problem, but you are not wise enough. I hope you can use this also. Again, a keyword and a tool that I have already given you, knowledge versus wisdom, you can use. Done. Knowledge used wisely can bring light to lives of people, or can be used to give them shocks also. That's very correct. Very correct. But I want to adapt this point as per my topic. My topic is, it is either you control the mind or the mind controls you. When the mind controls you, you can still have the knowledge. Lot of knowledge you have.
But when you control the mind, you have the knowledge plus the wisdom that has come along with it through an experience, because you are controlling it now. You know when to use it, you know how to use it, and you know where to use it. Got it, everyone? Okay, let's move ahead. Let's move ahead. I want you to talk about where the mind controls and where you control the mind. And I want to talk about one thing, and that is peace. That's a very easy thing. Peace. See, via this whole flow chart and this flow that I'm making, you can open up any paragraph dependent upon whichever looks relevant to the topic. When I say peace, see the topic once again. You either control your mind or it controls you. Now see the word peace. When the mind controls you, peace is not there. You can give any instance. But where you control the mind, you are peaceful. And there is peace that exists. As said by our Honorable late President Dr. APJ Abdul Kalam Sahib, he said that where there is harmony in the house, there is perhaps development and peace in the society. When there is peace in the society, there is peace in the international order, or maybe the state and then the international order. Peace is because you have control over your mind. Once you have the peace, you have that satisfaction also. You are wise enough also, and you can live your life that great. Let's move to another tool now. Let's see, if I want to bring about some maybe general studies here, can I talk about somewhat related with economy? Can I bring in economy in here? Where the mind is being controlled, and when the mind controls you, economy. Anyone who can give me an idea? Can we increase wisdom? Amanji, wisdom is actually not seen in that parameter of increase or decrease. Wisdom is too subjective. You can just gaining on every wising points every day, maybe you are just adding up to it. So the more wise you are, perhaps you have a lot of experience then. आइए YouTube Shorts जी आप एक बार reach out करिएगा Telegram पे, we'll talk there. ठीक है. Economy में how can you use this? Stability in economy, focused policy making. When you control mind, will take wise decision, else vice versa. That is very correct. But where do I head in economy? That is, please see. You have a word called as policy paralysis. Policy paralysis. Policy paralysis is when actually you are not in control of the mind. And hence you had the policy paralysis. Where you never had the control over your mind. No, their mind is only running by policy paralysis. See, everything is there. When the policy paralysis is there, development cannot come. Either you have jobless growth, growth will come, jobless growth. So this you can easily say. But where the mind is being under the control, where we have strong policies being made, there you can have the greatest of the development coming in. And there were times when the world was tottering under the economic crisis, India was growing, taking the lead and growing ahead. The era of 2007 to 8 and 9 and 10, where India was having the great growth rate. And that was perhaps because we did not have the policy paralysis then, we had the strong mind being controlled, and it was all about targeting some points and using it. So policy paralysis versus growth you can show, or versus development. And that development can be inclusive. Okay. You have already got one essay topic. I would like to repeat it right now. And that was, if the development is not engendered, it is endangered. I hope you remember that topic. If the development is not engendered, it is endangered. When the mind is controlling you, you are perhaps not engendering the things. But when you tame the mind, you control it,
you will engender the things. See, everything can be related once again. We have already done that part, and I can use this once again in here. I can use this once again in here. Is it fine with all of you? Can we do this? Can we do this? Yes, I suppose. Okay. Having done with this economy part also, I would now want to talk about one more aspect, and that is the great environmental concerns. The great environmental concerns. Please go ahead and talk about where the mind is being controlled and where the mind controls you. When the mind controls you, environmental degradation is for sure. Where you control the mind, the environment can be conserved. So it is rather about conservation versus destruction. Conservation versus negatives that we people are bringing into the environment, we can talk about that. And it is all about mind. It is all about mind and how do I use it. That's very correct. Sustainable development versus the destruction of the environment that might be happening through our environmental paragraph. I will talk about that. Done, everyone? Fine. So this is just a mix of what I am doing is a mix of general studies also and a mix of some philosophical ideas that we have discussed. Okay, let's move on and talk about some other thing, and that could be if I were to write down here science, I want to talk about here science and technology. I want to talk about science and technology. Can you say? Can you say something on science and technology? Where the mind controls and when you control the mind, and science and technology. Can you say something? Let me see how many of you can say something now. Where the mind controls and where you control. Anyone? Cyber crimes, artificial intelligence. So, when the mind is being controlled, when you are into the control of this mind, then what you get is perhaps the development for humanity. The science trajectory of development is for the human betterment. But when you get to be controlled by the mind itself, you get the likes of hydrogen bomb, you get the likes of nuclear bombs, etc., etc. This is what is all about my science and technology paragraph into this essay topic. And see how well we have moved like this, making a flow and moving ahead. It's not the end. Let's talk about some more points. Can I also bring in a dimension from my polity and can talk about where the mind is controlled. See the topic once again, everyone. The topic is you either control your mind or it controls you. You either control your mind or it controls you. And now you talk about the political dimension. And you talk about the political dimension. Social media, Richa Vasudevji, very correct. Social media use as a technology is neutral. It depends on how we use it. That's very correct. Appropriate technological development, very correct. Space use, polity, where the mind is controlled and the mind controls you. What different things can come by? And the political dimension of it. Let's see. The political dimension of it. Anyone? Very easy. Freebies. Okay. The mind controlling, giving a lot of freebies. That's very correct. Given by Muhammad Hamzaji. Very correct. Democratic good leader. That's again very correct. Welfareism. See, wherever the mind is under the control of some, or maybe the mind is under the control of the body, there you have. It is either you control the mind. So when you control the mind, there is democracy, there is welfarist approach that will be there, and there will be the power of love. There will be power of love. Wherever the mind controls you, there will be love for power. Wherever the mind controls you, there will be love for power. I think you can talk about this point here. Very apt to say here. Wherever the mind is under control, there is great power of love.
But wherever the mind controls you, there is only love for power that is existing. Democracy cannot exist there. Everything is again related. I hope you can understand this now. आगे समझ में? Polity and how did I relate this? Can you get the point now? Can you get an idea how do we get this? Tyranny in governance with unnecessary use of acts by bending of rules, examples, addition laws, detention. So when the mind is controlling, you will have these things only. But wherever the mind is being controlled, you have such beautiful things coming by. Samajh get done? Done everyone? Is it fine? I want you to give me another 2 paragraphs from the philosophical tools that I have given you. From the philosophical tools that I have given you, please give me 2 more paragraphs and let me see if you remember them or not. 2 more paragraphs I need from the bunch of philosophical ideas I have already given you. I need 2 more paragraphs. Please tell me. Yes, it causes dictatorship also when the mind controls you. Very correct. I need 2 more paragraphs from the tools of philosophical essays that I have given you. Happiness, good life covered. Life covered. Satisfaction, happiness, somewhat related. Peace, somewhat related. Anything else? Ultimate aim of life. Simplicity. That is what I was looking towards to. Simplicity can be one of the paragraphs. Simplicity. Very good. Success and failure will be the second one. Yeah, purpose of life can also be there. Very correct. Simplicity is one paragraph that I would want to talk about now. See, my topic is you either control your mind or it controls you. When you control the mind, simplicity would be love. You love simplicity. Where the mind controls you, there is no notion of simplicity. Rather, everything becomes complex then. Our life is simple. We intend to make it complex. Confucius says this. Our life is simple. We make it complex. It's because that if we are controlled by the mind, we will make it complex. But if we have control over the mind, we will make a simple life. That is what you can talk about. A simpler life is well-lived life and has all the notions of goodness in it. So this is simplicity, and I would again take one idea from your great thing, and that is success and failure. Success and failure. See, where the mind is being controlled, success and failure would not be meant in the real sense what they look like today. Success and failure perhaps are going to be something which gives you always some positivity even if you have the success or failure. But if the mind controls you, the topic once again, see this. You either control your mind or it controls you. And if the mind is controlling you, even the success can be a negative thing for you, or maybe you become negative, even the failure can lead you to the negative trap. It is all dependent upon how do I use this. Success and failure and the application of mind. See the paragraphs you have written so easily. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paragraphs written. Still I have to write a flip side of it plus the conclusion. Perception also one of them. Very correct. And I have told you now, you have to write one flip side of it. Please tell me, my topic is this. My topic is this. You either control your mind or it controls you. What can be a flip side of it? What is the flip side of it? Flip side means the type or something beyond this. What can be the flip side of it? Please tell me. Anyone who can tell me the flip side of this? The beyond part? Anyone? The beyond part? Time. Okay. Anyone else? Following middle path. You either control your mind or it controls you. Vincit, koi se vincit. Okay. Infinity thoughts. ठीक है. See, I would like to take this as a notion. You either control your mind or it controls you. This can be paraphrased as
we can take over the control of our mind once we have the awareness of how to do this, and that will only come via our education, our awareness, our perhaps the family system. So I would like to paraphrase this is in the sense that yes, either the mind can take control of us, but we can learn to allow the mind to be controlled or to uncontrol whatever control the mind is having on us via our education, via, very rightly said, by spirituality, by physics graduation. Person says that spirituality, again very important, via education and via our spirituality, we can try to gain control over it. So it's not only the fight between control, it is about how we can try to tame our mind via education system, via spirituality, and we can attain a control over it. Till that time, we don't have that education system. We are still struggling, but then we are developing each day. I think you can talk about this. And now comes my concluding paragraph. In the concluding paragraph, what I would write down is, from wherever I started. From wherever I started is, I started from a talk between maybe a mother sharing a bond, maybe with daughter, maybe son, maybe with father, and they were talking, discussing. I will again get back there and I will talk about it. Now the father or the mother says that definitely the generations that are going to come are going to control their mind because of the great educational values that we are passing on to them. We as family are passing on the educational values to them, and hence they would be absorbing it well, and they will have all the capacities to get the potentialities of maybe controlling the mind. देख लिया, डन. अब सोचिएगा, जो एग्जामिनर आपके अंतिम के पैराग्राफ को पढ़ रहा है, वो आपसे प्रभावित हो गया इस बात से कि आपने जहां से चालू किया था, लगभग आपने उसी छोर पे बंद किया है. आपने चालू किया था माता पिता या फिर बेटा और का टॉक हो रहा है, और आपने अंत में लाके भी वही लिखा है कि नाउ द फादर पास्ड ऑन टू दिस, कि आप लोग टेम कर सकते हो. वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड देन यू कैन ट्राई टू मेक द होल सर्कल ऑफ दिस एसे. ये है तरीका फ्लो बनाने का. I wanted to do this in front of you so that everything is there in your head. When you use the rough space behind your pages that day, you will get lot of ideas. अभी उसको आधा घंटा तक लिखना है, 1.5 घंटा एक ऐसे पे देना है, आधा घंटा आराम से आप एक ऐसे का रफ करिए. एंड व्हेन यू डू ऑल दिस चॉकिंग आउट, ये सारा आइडिया आपके पास तैयार है, अब लिखना चालू करिए, एंड यू विल परहैप्स गेट योर गुड एसे कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, मजा आया, मजा आया, समझ में भी आया और मजा भी आया इसको करने में. तरीका ठीक लगा? that we have done this. These are your thoughts that you have done, and I suppose you might have enjoyed this. ठीक है, चलिए अभी तो एक हुआ है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक. आइए, एजुकेशन ब्रीड्स पीस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एसे. व्हाई आई फील अभी पिछले 5-6 महीने से एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है. दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी काफी टिप्पणी की गई, चारों तरफ लगभग कुछ ना कुछ बातें चली रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड. और जब आप ऐसा करेंगे, ये उसका कंक्लूजन हो सकता था सृष्टि जी, कौन सा वाला जो हमने आपको बताया था ना. हाँ, ये अच्छा, ये टॉपिक भी हो सकता है. राइट राइट, वेरी करेक्ट. एजुकेशन गिव्स पावर टू कंट्रोल द माइंड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए, अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मजा चालू हुआ है. वो जिनको नहीं आ रहा था वो है, अभी चले गए, पता नहीं, हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा है. आजकल जमाना ऐसा है, वाकई में हंसी बर्दाश्त नहीं होता है किसी को. When you laugh, people really feel that you're laughing. मतलब they not see positivity on someone's face. मुझे यार हंस क्यों रहे, अरे ऐसी चेहरा तो क्या करे. So what one can do? ऐसे करके, ऐसे पढ़ना है आज हम लोग को, आइए कुछ ऐसे की बातें कर लेते हैं. ऐसे करके कौन पढ़ेगा यार? Want to study like this? I cannot do this. अभी इसमें किसी को परेशानी हो रहा है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं. What you can I do यार?
चलिए कल से वो I'll bring some lemon also, no? Keep on putting this into the eyes so that वाकई में वो फिर आंसू देख के ही पड़ेंगे. चलिए आइए. Education breeds peace, that is my topic, and I feel a very great gut feeling कि ये शायद कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड इस बार आना है. आपको भी तैयार करना है अपने आप को. देखिए कुछ फैक्ट्स है जो आप तैयार रखिएगा. वो फैक्ट क्या है, आपको लगभग हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन किए होंगे एजुकेशन के ऊपर डोज ऑफ नोट्स में से, वो निकालिएगा, वो यूज करिएगा. हम लोग एक फ्लो बनाने की बात कर रहे हैं यहां पे. आइए ये टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए. एजुकेशन ब्रीड्स पीस, एजुकेशन ब्रीड्स पीस, एजुकेशन ब्रीड्स पीस. एंड लेट्स स्टार्ट द थॉट प्रोसेस अगेन. आई वांट एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू ऑल. I want an introduction from you all. Tolerance, ठीक है, बिल्कुल सही है. Peace, tolerance, yes, we can talk about. Introduction. इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं? स्पीच ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल दे सकते हैं. एनेक्डोट पे जाइए. देखिए हमेशा बदलना नहीं है अपने आप को. आपके पास एक ही नैरेटिव तैयार हो, उसी को बार बार यूज करिए अलग अलग तरीके से. एजुकेशन की बात हो रही है तो आपके पास संवाद आ सकता है टीचर और स्टूडेंट का, आप वो दिखा दीजिए. सोइंग सीड्स ऑफ राइट एजुकेशन, ठीक है, आप यहां एनेक्डोट दिखाइए. एनेक्डोट कॉमन रखिए, आइडिया कॉमन रखिए, बस उसमें कैरेक्टर चेंज करते रहिए. What can be introduction? See, education breeds peace. ये बात है. सोचिए, anyone? बार बार बदलिए मत अपने आप को, फिक्स करिए. एनेक्डोट एक दिमाग में रखिए, उसी को बार बार चेंज करते रहिए. कैसे आप बता सकते हैं एजुकेशन ब्रीड्स पीस? बताइए. ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी, मदर, I'll again bring her. Education is a powerful weapon to change. That's very correct. You see, you all have those ideas. You all have those ideas. See, I'm trying to do something. If you can appreciate, great. If not, even greater. Okay, don't worry. I'm trying to help. See, I'm trying to make an anecdote. There is a mother. She's struggling with the income. She wants her child to be studied. And she wants this. When the son or the daughter asks her, why are you so much worried about my study? Let me work. Then she replies. Then see how emotional quotient I'll be bringing in. Then she replies that son or daughter, your education is going to bring peace to me. Your education is going to bring peace to this family. Because peace today has a notion where the people would be needing some money to live their life. When you have education, you will be much more aware, hence I will be peaceful. When you have the education, you will have all the capacities to develop, I will be peaceful. When you have the capacity to develop, this whole family and the society will grow, I will be peaceful. And when I will be peaceful, the society can be peaceful. See, how do I relate this mother and her hard work that she is doing to teach her child, and a story that can be done there? Anyone reading this, I can bet you, it's a very different ball game now. We are not going into quotations. If you go into quotations, you will get marks. Here 115, 120 you can get. I am not fighting for 115, 120. I am fighting for 150. I am fighting for 160. तो 150 160 के लिए फाइट करना तो ये लगाना पड़ेगा. एंड व्हेन यू राइट सच थिंग्स, अभी एग्जाम में पढ़ा अलग चीज, ये बात इसने कुछ सही लिखा है. नाउ यू ओपन अप योर पैराग्राफ. नाउ इट इज अपॉन यू. यू आइदर अप्रिशिएट दिस और यू राइट योर ओन. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. माय ओनली नोशन इज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू समथिंग. सी, एनेक्डोट हमारे दिमाग में बना हुआ है. Whatever the topic, I want to just embed that into my anecdote. You will always find mother, child, womb, daughter. I'll always try to bring them. Why I'm doing this is because I want to make an impact of emotional nature also there. I told you the first day, it is
not hard to write the common things again and again. Mahatma Gandhi ji, everyone can write. We can all talk about that education is the most powerful weapon to bring about peace. But then I want to be different. And when I am different, I get different numbers. And that too for the positive part only. ठीक है, समझ गए? चलिए, that was my attempt. You can attempt yours. That was my attempt. After writing this, let's go on to the start of another paragraph. Education breeds peace. From history, can you give me an idea where the education has breeded peace? इतिहास में जाइए, झांकिए और बताइए कि क्या एजुकेशन से पीस मिला था या नहीं मिला था. जाइए और झांकिए. तक्षशिला. एजुकेशन से पीस मिला ही मिला था. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जिस भी रेजिम में एजुकेशन के ऊपर बात की जाएगी वहां पीस आना संभावित है और बहुत हद तक संभावित है. चर्चित जी का कहना है अकबर के रेजिम में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. आप अकबर दे दीजिए. अरे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आ जाइए. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में हमेशा एजुकेशन का पहलू रखा गया है. इसी एजुकेशन पहलू के बदौलत शायद जब सब कुछ डेवलप हुआ, लोगों में अवेयरनेस डेवलप हुई, तब जाके कहीं एक पीस दिमाग का आने वाला था और वो था फ्रीडम. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन. आप सोचिएगा, गुरुकुल सिस्टम लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं. My topic is breeds peace. Wherever this education will come, it will breed peace. Wherever it is. Done, everyone? Can you write down this? Any one topic you choose, any one idea that you have from history, use it. From freedom movement, from maybe Akbar regime, जो आपको लिखना है, पर प्रूफ करिएगा. टॉपिक हमेशा एको होना चाहिए. डू रिमेंबर एको. एको इज you repeat the topic in some form or the other. Hence education was breeded or was breeding peace. Hence education breeded peace. ऐसा लिखते रहना है आपको. You can do this. Let's move ahead. I have done my history paragraph. Education, let it breed peace. And I want to talk of an example from the geographical dimension. Please give me an idea from geographical dimension where you feel that this education has breeded peace. See, on the Human Development Index, when you see, the Scandinavian countries are much more ahead as compared to the southern, perhaps, hemisphere, I would say. Not the southern hemisphere, I would say the southern countries. But then if you see, it is education that is breeding the peace. That means wherever it is, peace exists in the society. Wherever the things are not as much of the education, if it is there, if it is not there, there the problem of such events through which violence, war can be seen. Peaceful resolution of border disputes, yes, you can talk about, very correct. You can talk about in the geographical dimension. Education, देखिए हर चीज में आपको यही लेके आना है. Education breeds peace. अगर आप ये लेके नहीं आएंगे तो आपका irrelevant हो जाएगा जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे. You have to bring in how education is breeding in the peace. वो कैसे ब्रीड कर रहा है पीस, आपको बार बार लाना पड़ेगा. ये कैसे आप लाएंगे आपको सोचना है. हाउ डू यू ब्रिंग दिस? ठीक है. आई होप यू कैन टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल डायमेंशन. आप नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखा दीजिए. एजुकेशन डिप्लोमेसी आप दिखा सकते, चलेगा चलेगा. नॉट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. इंपैक्ट कहां बनेगा आप ऐसा दिखाइए ना. जहां पे एजुकेशन है वहां पीसफुल चीजें बन रही हैं. वी कैन सी दैट देयर आर थिंग्स वेरी पीसफुल देयर. बट वेरेवर एजुकेशन का अभी भी एक थोड़ा सा गैप रहता है, वहां पे पीसफुल चीजें नहीं है. यू कैन टॉक अबाउट एनी सच एग्जांपल, इवन फ्रॉम इंडिया यू कैन कंपेयर इट. वेरेवर यू हैव द एजुकेशन लेवल गोइंग मच हाई, द पॉवर्टी लेवल गोज डाउन देयर, द क्राइम रेट गोज डाउन देयर. Peace, education breeds peace. Wherever the education levels are not so good, somewhat society is in somewhat of disorder. आप लिख सकते हैं. चलिए, दो टॉपिक हो गया. टॉपिक फिर देखिएगा, एजुकेशन ब्रीड्स पीस. दो पैराग्राफ अभी तक हमने इसमें लिख लिया है. आइए तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं. और तीसरा पैराग्राफ तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा. वी टॉक अबाउट सोसाइटी हियर.
सी द फ्लो, जीएस के हिसाब से आई एम जस्ट गोइंग अवे, फ्लोइंग। सोसाइटी, टॉपिक क्या है? एजुकेशन ब्रीड्स पीस। सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी में एजुकेशन का मात्रा बढ़िया है वहां पे डेवलपमेंट है, वहां पे ग्रोथ है, वहां पे पीस है। और जहां पे भी वो नहीं होगा वहां पीस नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। जहां पे अवेयरनेस है वहां विमेन इंपावरमेंट है, तुरंत ब्रीड्स पीस। विमेन इंपावरमेंट पीस लेके आएगा। अगर विमेन आप डेवलपमेंट को इंजेंडर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। विमेन इंपावरमेंट विल ब्रिंग इन द पीस। तो अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट है तो मतलब एजुकेशन है, मतलब विमेन इंपावरमेंट है, एंड हेंस द पीसफुल सोसाइटी। तो एजुकेशन ब्रीड्स पीस। सी आई एम echoing again and again for you to make your mind tame like this। बार बार इसको एको करते रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। LFPR, that is labor force participation rate, will increase, very correct। So once you have the education there, labor force participation rate of women goes above. When it goes above, it is empowering of the women, and when she is empowered, there is societal perhaps peace that is existing। Societal peace exist करेगी ही करेगी। 3 पैराग्राफ अभी तक आपने लिख लिया और आगे चलते हैं। आइए चलिए बताइए। I want to link polity to it। एजुकेशन ब्रीड्स पीस, पॉलिटी, बताइए पॉलिटी कौन बताएगा? पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन ब्रीड्स पीस, एनीवन? बहुत आसान हो सकता है, जाके एक बार झांकिए पार्लियामेंट में, तब बताइए। थोड़ा पार्लियामेंट एक बार घूम के आइए, फिर सोच के बताइए। लिंकिंग बाय मोर विमेन इन जुडिशरी, अच्छा, सो मोर ऑफ विमेन इन जुडिशरी, ठीक है, वेरी करेक्ट। देखिए वेरी करेक्ट इज द पॉइंट इज एजुकेशन ब्रीड्स पीस। हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। पॉलिटी में जब आप बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का रोल आ जाता है। डेमोक्रेसी को बेहतरीन बनाने के लिए, देखिए अगर आप थोड़ा सा इस पे बुरा ना माने तो आपसे कुछ बात कहें हम, जो आज आपके डेमोक्रेसी का नोशन है वो विदाउट अवेयरनेस और एजुकेशन उतना पावरफुल नहीं है जितना लोगों ने सोचा था। इसको डेमोक्रेसी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर डेमोक्रेसी का नोशन जो सोचा गया था कि ये डेमोक्रेसी भारत की होगी, वैसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस उस लेवल तक जा नहीं सका। इसीलिए डेमोक्रेसी भी पीसफुल तभी होगी जब एजुकेशन सिस्टम वहां पे दुरुस्त होगा। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू बी एजुकेशनल सिस्टम्स ग्रोइंग पावरफुली वेल, सो दैट जब वो पावरफुल होंगे देन द पीपल गेट एन आइडिया, दे गेट इक्विप्ड विद नॉलेज, विद अवेयरनेस, एंड देन ओनली यू कैन हैव अ ट्रू नोशन ऑफ डेमोक्रेसी सेटिंग इन। नहीं तो डेमोक्रेसी तो है, पर जो वाकई में नोशन चाहिए था डेमोक्रेसी का वो नहीं है। वो तभी आएगा जब एजुकेशन होगा। देखिए फिर से, एजुकेशन ब्रीड्स पीस वाया अ ट्रू डेमोक्रेटिक ऑर्डर, अ ट्रू डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? आपको ये बात पता होगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने एजुकेशन को हटा के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो दे दिया, पर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग? इज इट फाइन विद ऑल ऑफ यू? कैन आई राइट दिस नाउ? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख के आएंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए पॉलिटी लिख लिए, थोड़ा बहुत गवर्नेंस का भी बात कर लीजिए। एजुकेशन ब्रीड्स पीस, जस्टिस इन द पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरकोर्स। ठीक है, ठीक है, सब चलेगा। आपका कोई भी पॉइंट हम काटेंगे नहीं, हम आपके हर पॉइंट को अप्रिशिएट करेंगे और हम चाहेंगे कि उसको और दुरुस्त कर लीजिए और बढ़िया कर लीजिए। लास्ट माइल कनेक्टिव स्किल्स विद ब्रीड पीस अमंग पीपल, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके पास ऐप आके रखा हुआ है, आपके पास सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहे हैं और वेदर फोरकास्टिंग भी की जा रही है, परंतु लास्ट माइल तक अगर वो नहीं पहुंचता है तो फायदा क्या? हर टेक्नोलॉजी को, हर स्कीम को लास्ट माइल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कीम लॉन्चर्स की नहीं है,
ये जिम्मेदारी उतनी ही उस एजुकेशन सिस्टम की है जो शायद उन लोगों को तैयार करे कि वो टेक्नोलॉजी और स्कीम को समझ सके। भारत में लगभग वो स्कीम्स जो भी लॉन्च होती हैं उनका ऊपर के तबकों में ही ज्यादातर इस्तेमाल दिखता है, नीचे तक वो स्वीप डाउन नहीं हो पाता है। इसको नीचे तक ले जाने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम को फिर से दुरुस्त करना पड़ेगा और तभी पीस आएगी। मार्जिनल लैंड ओनर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड ओनर्स को अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए स्कीम तो बहुत आती है, पर क्योंकि उनके पास इतना आइडिया नहीं होता है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट द आइडियाज कि व्हाट आई हैव टू डू विद द स्कीम। सिंपल सी बात है, गवर्नेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, क्या आप इंटरनेशनल चीजों से कुछ निकाल के हमें दिखा सकते हैं? आई नीड सम इंटरनेशनल एग्जांपल्स वेयर एजुकेशन हैज ब्रीडेड पीस। I need some examples from international also where it is not only about the country now. See, this essay is not about our country. Education breeds peace. I have to be very general. और general में I want to talk about कि क्या हो सकता है। international example कोई हो सकता है क्या? क्या कोई international example है आपके पास? बताइए। Participative democracy होगा governance के थ्रू, बहुत बढ़िया। Like peaceful agreements are outcomes of war. Good practices can be learned from Rwanda. देखिए, किसी का भी हो, आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं और आप सिंपल ये भी बात कर सकते हैं, जहां का भी एजुकेशन सिस्टम इज गुड, दे ऑलवेज टॉक अबाउट पीस देयर। अगर नोशन लेंगे आप जापान का परहैप्स अगर आप देखेंगे, इट इज परहैप्स पीसफुल थिंग, पीस एग्जिस्ट देयर अनलेस अंटिल सम नेचुरल कैलामिटी डज नॉट हैपन, वो पीसफुल है। हाँ, अभी के हालांकि कुछ अभी के रिसेंट के हालातों को देखते हुए तो नहीं लगेगा, पर ठीक है, अगर ओवरऑल आप कहें इट्स अ पीसफुल थिंग। कोई भी देखिए, साउथ कोरिया पीसफुल। तो एजुकेशन ब्रीड्स पीस। आप कहीं का भी लिटरेचर, स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे चलिए, स्वीडन चलिए, पीस। व्हाई पीस इज देयर? वेयर बिकॉज एजुकेशन हैज ब्रीडेड इन देयर, इट इज स्प्रेड लाइक एनीथिंग देयर। वंस एजुकेशन इज देयर यू कैन हैव आइडिया ऑफ इंटरनेशनल थिंग। हाँ, अब आप कंपेयर कर सकते हैं अपने उन कंट्रीज में जहां परेशानी है, जहां एजुकेशन है ही नहीं। आप आ जाइए सोमालिया में, वहां एजुकेशन क्या होगा? वहां खाने के लिए लोग परेशान है, एजुकेशन कैसे होगा? आप कहीं भी ऐसे वॉर टोर्न कंट्रीज में आ जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, और सुन रहे हो बस इस समय, चले जाइए। अब वहां पे जब एजुकेशन का कोई ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट हैव गुड पीस कमिंग टू देम, पीस नहीं हो सकता वहां। तो आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स दे दीजिए। Why I'm doing this is I'm trying to show them. See, it's a very broad ambit. अच्छा, और देखते हैं अब, कलम रुकेगी नहीं। और आइए तीसरे पे आ जाते हैं। You have seen polity, governance, आइए let's talk about now economy. बताइए, education breeds peace, economy. Education breeds peace, economy. See, economy talks about what is your income, what is your growth, what is country's growth, what is national development, national growth. तो ये इकोनॉमी जब ग्रो करेगा कैसे? When you have education. When you have education, you have people well trained to take up the job. तो जॉबलेस ग्रोथ नहीं होगा, वो जॉबफुल ग्रोथ होगा, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, मतलब इकोनॉमी बूस्ट करेगा। जब इकोनॉमी बूस्ट करेगा मतलब क्या हुआ? सिंपल सा, you have peace. So economy is also an idea about peace now. ठीक है, हाँ, पॉलिसी पैरालिसिस विल बी रिजॉल्व, वेरी करेक्ट, हो सकता है। इकोनॉमी वाला पार्ट भी हम लिख सकते हैं। आइए और दिखाते हैं। क्या आप इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बोलना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंट पैराग्राफ के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना पड़ेगा आपको। टॉपिक याद करिए फिर से। टॉपिक क्या है? एजुकेशन ब्रीड्स पीस। एजुकेशन ब्रीड्स पीस एंड आई हैव द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट नाउ। बताइए, जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर, बहुत बढ़िया। इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब कुछ लिख सकते हैं आप। यहां देखिए इन्वायरमेंट का पार्ट, जब आप पीस चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यू वुड वांट सम पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। वो कब आएगा? जब आप अवेयर होंगे। वो कब होंगे? जब आपके पास एजुकेशन होगा। एजुकेशन is perhaps one of the solution being given for environmental conservation. हालांकि इसका फ्लिप साइड भी आज अवेलेबल है, परंतु फिर भी हमें ऐसे अपने हिसाब से ही लिखना है। हमें अभी थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से लिखना है।
So we'll say that education will bring in a conservationist approach and that brings in the peace with the environment. So it will be peace with the environment. Clean energy हो, usage of energy हो, efficiency हो, wastage of energy को कम करना हो, ये सब आपका एजुकेशन से रिलेटेड है और ये सब आपका इन्वायरमेंट को रोकने इन्वायरमेंट को अच्छा करने में मदद करेगा। समझ गए? अभी भी कहां रुकना है? अभी देखिए, अभी चलते रहिए। साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर एजुकेशन है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो किसके लिए होगा? फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यू आर गोइंग टू हैव द एजुकेशन यूज्ड फॉर डेवलपिंग द रिसर्चर्स माइंड, द साइंटिस्ट, फॉर ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट। ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए सब हो रहा है, इसको याद रखिएगा। ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। अगर एजुकेशन नहीं है उस हिसाब से, तो ना ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा और ना ही वो फिर मदद कर पाएगा नेशनल डेवलपमेंट में। नेशनल डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए साइंस टेक्नोलॉजी भी चाहिए और साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और देखते हैं सिक्योरिटी। एजुकेशन ब्रीड्स पीस। लगभग देखा जाता है कि आजकल कुछ ऐसे दिमाग हैं जिनको लगता है कि इफ दे आर नॉट एजुकेटेड दे मस्ट डू ऑल सच नेगेटिव एक्टिविटीज ऑल अराउंड। वो पीस तो नहीं लेके आ रहे। अगर एजुकेशन सही वाला है, दैट्स द वैल्यू एजुकेशन along with the formal education, then these people are going to get lot of ideas about how to be having peace existing. तो पीस के लिए सिक्योरिटी एसेंशियल है, पर इस सिक्योरिटी को भंग करने के लिए वो लोग कई बार जिम्मेदार हो जाते हैं जो कि शायद अपने दिमाग को या अपने आप को उस हिसाब से एजुकेट नहीं कर पाते हैं। अगर एजुकेशन सही तरीके से है, a strong defense is an investment in peace। बहुत बढ़िया सृष्टि जी, I think we have written it down somewhere। A strong defense is an investment in peace। और strong defense का मतलब तभी होगा जब आपके पास strong educational system होगा, so that you develop your own weapons, you develop your own people, you make your own people capable। ठीक है, ओके। सिक्योरिटी भी हो गया। और बताइए, अभी रुकना नहीं है, अभी और लिखना। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बाहर से भी एग्जांपल आप दीजिए। आप बाहर से भी एग्जांपल दे सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। थ्रू एजुकेशन द पीपल हैव बिल्ट व्हाट नॉट, सुनामी वार्निंग सेंटर्स। They have developed even the early warning centers for almost many disasters. What is this? They are trying to bring in education, spread education, let people get that education, and then disaster management is happening. ठीक है, डन है, ओके। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अभी तक कोई भी ऐसा जीएस का टॉपिक है जो छूट रहा हो, जो आपको लग रहा हो मुझसे छूट गया हो? ऐसा कोई भी ऐसे का टॉपिक है? एजुकेशन ब्रीड्स पीस। एजुकेशन ब्रीड्स पीस। कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया हो, कोई टॉपिक? एनी टॉपिक दैट यू फील लाइक इज लेफ्ट आउट? कोई ऐसा टॉपिक है जो लग रहा है छूट गया हो? एनीवन? हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, आइए आप हेल्थ लिख सकते हैं। वन ऐसे पैराग्राफ ऑन हेल्थ। एजुकेशन ब्रीड्स पीस। हमने शायद एक एग्जांपल आपको दिया है, जहां पे भी एजुकेशन विमेन में अच्छा था वहां पे हेल्थ ऑफ विमेन वॉज वेरी गुड। अनेमिया कम था जहां पे भी एजुकेशन लेवल अच्छा था। ठीक है, आप हेल्थ भी लिख सकते हैं, वन पैराग्राफ ऑन हेल्थ ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सम फिलोसॉफिकल आइडियाज इवन इन हियर। एजुकेशन ब्रीड्स पीस। आपके पास पीस के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि क्या है ये पीस, आखिर ये पीस है क्या। आप ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज दैट पीस। इसको आप स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए। ये पीस वाला पैराग्राफ आप कहीं स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए, यहां पे कहीं स्टार्टिंग में ही कहीं लिख लीजिए। एंड देन यू हैव योर एथिक्स कमिंग इन। एजुकेशन ब्रीड्स पीस मतलब वैल्यू एजुकेशन भी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं, वैल्यू एजुकेशन भी चाहिए, एथिक्स। एंड देन यू राइट डाउन द फ्लिप साइड ऑफ इट कि एजुकेशन ब्रीड्स पीस का फ्लिप साइड क्या होगा, बताइए। एग्रीकल्चर, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं आप। विमेन का अलग भी कर सकते हैं, सोसाइटी से विमेन का अलग कर लीजिए। एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं आप।
यू कैन टॉक अबाउट एग्रीकल्चर ऑल्सो, वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर अलग भी लिख सकते हैं आप, विमेन का अलग से लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं। एक फ्लिप साइड लिखना है। अब इसका बताइए, एजुकेशन ब्रीड्स पीस का फ्लिप साइड, फ्लिप साइड का मतलब रिडक्शन इन बर्थ रेट, साउथ कोरिया। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा बदलना चाहेंगे। ठीक है, एजुकेशन कोशिश तो करता है कि पीस ब्रीड करे, बट द प्रॉब्लम इज द एजुकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी पैसिव थिंग। भाई आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, ठीक है, पर आपका खुद का दिमाग कैसा है? सेम नॉलेज कैन बी यूज्ड टू रीच मार्स, द सेम नॉलेज कैन बी यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, द सेम केमिकल्स कैन डू वंडर्स, द सेम केमिकल्स कैन बी यूज्ड टू परहैप्स डू डिस्ट्रक्शन। एजुकेशन तो पीस के लिए ही बना है, but the people, when they get this education, they are not wise enough to use it, and they sometimes use it for non-peaceful purposes. तो एजुकेशन को कोशिश की जानी चाहिए कि सिर्फ पीस के लिए यूज किया जाए, पर लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया है, कुछ लोगों ने, या कुछ लोग बना देते हैं, जिसकी वजह से पीस कई बार नहीं भी आ पाती है। और अगर पीस नहीं आएगी, इसका साफ मतलब है कि जिसके पास भी नॉलेज था, इट इज यूजिंग इट फॉर सम डिफरेंट थिंग्स नाउ। इसीलिए आज टेररिज्म इतने बूस्ट पे है, और आप देख रहे होंगे कि टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए आज कुछ एजुकेटेड लोग भी बैठे रहते हैं, जुड़ते हैं उनके साथ। ये कैसे संभव है? क्योंकि उनका एजुकेशन तो है, पर एजुकेशन सही मायने में जो होना चाहिए, वैल्यू, वो नहीं है उनके पास। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो पीस को ब्रीड करें। कई बार शायद वो, क्योंकि उसमें इंसान इन्वॉल्व है, ये इतना सब्जेक्टिव होता है कि शायद वो आउट ऑफ पीस भी चले जाते हैं, या फिर पीस को कई बार ब्रीड नहीं भी करते। इसको लिख के आप फ्लिप साइड लिख सकते हैं, एंड देन यू एंड अप इट अगेन। हमने चालू कहां से किया था? हमने चालू किया था कहां से? एक हम बात दिखा रहे थे, मदर वर्किंग वेरी हार्ड ताकि बढ़ सके लोग। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, नाउ द सन इज सो हैप्पी टू नो कि I can be protagonist for this world order, for this global order, and hence I will study now. ये हमारा कंक्लूजन होगा, hence I will study now. So I think you can appreciate this point now, making a full circle of the essay and then completing it. कर सकते हैं, उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं ऐसा। Technology use educator for spread rumors. Technology use educator for spread rumors. समझ में नहीं आया ये क्या बोला आपने? ठीक है, डन है। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी हम लोग किया जाएगा। और इसमें टॉपिक्स हमारे पास बहुत है जो आने वाले हैं, बट आई डू दिस द नेक्स्ट टाइम, देन लेट इट बी दिस मच ओनली टुडे। तो स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं, आप CMC कोड लगा के आ सकते हैं। देखिए, किसी को भी मन हो सब्सक्रिप्शन लेने का, आई हैव एडेड माई नंबर ऑल्सो इन टेलीग्राम, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन डू एनीथिंग। सेकेंड, नीचे एक फॉर्म होगा, उसको आप भर सकते हैं, आपसे संपर्क हम भी कर लेंगे। नीचे फॉर्म को भी आप भर सकते हैं, नमस्ते नमस्ते, और आप उसमें अपना डिटेल डाल दीजिए ताकि आई कैन रीच आउट टू यू। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, मेंटरशिप चाहिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारी चालू हो चुकी है, जिसमें ऑप्शनल भी है हमारा और GS भी है। CMC कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे भी। Unacademy, I think all the more reason of having the top educators, lot of things happen here. आप इसका पूरा फायदा उठाइए और इस एग्जाम को जल्दी से क्रैक कर लीजिए। कॉम्बैट्स हमारे होते रहते हैं, इस संडे को भी कॉम्बैट होगा, फिर से आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कॉम्बैट देते रहिए, जब आप क्वेश्चंस देते रहते हैं तो आपके दिमाग में खूब सारा हलचल बना रहता है कि कैसे करना है। UPSC प्रिपरेशन अगर आप देखें तो हमारे पास डाउट दरबार भी है, और इसमें डाउट दरबार में आप कोई भी चीजें पूछ सकते हैं, किसी से भी आपको सवाल पूछना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी आपको पूछना है, आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। और 0% EMI में आप ले सकते हैं, मतलब आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना है, आप आराम से अपना EMI बना के भी दे सकते हैं, और मिनिमल पेपर वर्क में आपका ये काम हो जाएगा। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट फी नहीं है। ऑप्शंस भी सारे लॉन्च हैं, आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, पब, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी है। नोट्स 2.0 भी लॉन्च है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, और उम्मीद है आप लोग निरंतर रहेंगे, अपने कार्य में सफल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।